हेलो गाइस, दिस इज वर्तिका सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पाइथन में फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। a इज इक्वल टू int input, enter your first number। अब हम एक वेरिएबल लेंगे num1 और उसमें हम डाल देंगे a का वैल्यू। सिमिलरली b इज इक्वल टू int input, enter your second number and num2 में b का वैल्यू 2 is equal to b। ओके, अब हमें यहाँ पे निकालना है HCF। सो while num1 mod num2 is not equal to 0, remainder is equal to num1 mod num2। Now num1 is equal to num2 and num2 is equal to remainder and HCF हो जाएगा हमारा num2। ये वाला मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है, यहाँ पे मैंने HCF कैसे निकाला। सो अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू हो जाएगा a डिवाइडेड बाय HCF एंड b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय HCF एंड फाइनली हम प्रिंट करा देंगे a बाय b। ओके, सो हमारा कोड यहाँ पे रेडी है, हम उसको रन करके देखते हैं। सो एंटर योर फर्स्ट नंबर लो 2, सेकेंड नंबर 6 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा वैल्यू हो जाएगा 0.33।